Hello guys, welcome back. And this video is all about the practice test, ratio and proportion. So I have given you 15 questions for solving and now it's time to get your solutions. So I'm giving you all the answers so that you can check, you can verify and also some of the short tricks are also shared in this video. So let's get started. So first of all, question number one is there, 1 by x ratio ratio 1 by 6 is equal to 25 by 6 ratio 1 by x. And here you have to calculate the value of x. So whenever two ratios are equal, they are said to be in proportion. So there are two ratios in this question and ये दोनों किसमें है proportion. So applying the rule, product of extreme is equal to product of means. 1 by 6 multiplied by 25 by 6 is equal to 1 by x into 1 by x. Let's do some simplification. X square equal to 36 by 25. So we have done the cross multiplication. On solving, what we are getting, value of x is equal to root of 36 by 25. And what is the root of 36 by 25? It is 6 upon 5. And if you want to write them in the ratio की form में लिखना है, then numerator will be written first and after that you will write the denominator. So correct answer is 6:5. All right. This is question number one. Now the second one. A fraction bears the same ratio to 1 by 27 as 3 by 7 does to 5 by 9. So again, it is very similar question. लेकिन कैसे करना है? Let us understand with the simple method. A fraction bear the same ratio. तो उस fraction को हम क्या मान लेते हैं? X. तो let us assume this fraction as X. तो X का ratio है किसके साथ? 1 by 27 के साथ. एंड इट इज सेम एज, ये किसके जैसा है या किससे इक्वल है? 3/7 रेशियो टू 5/9. अब ये बन गया आपका नॉर्मल प्रपोर्शन का क्वेश्चन. नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो x मल्टीप्लाई बाय 5/9 इज इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई बाय 3/7. Let's solve this. X equal to 3 multiplied by 9 upon 5 into 27 multiplied by 7. Let's have some cancellation. 3 into 9 is 27 and here also 27. So X is equal to 1 by 35. So 1 by 35 is there, option number B. So B option is correct. So for those students who are not having this PDF file or this test paper, so I will add this in the comment section or in the description section. तो आप वहां से इसे download कर सकते हैं. All right. So this was question number 2. Then question number 3 is find the sub-triplicate ratio. Sub-triplicate means you have to do the cubic root. क्यूबिक रूट करना है आपको किसका? 8 and 27 का. So cubic root of 8 versus cubic root of 27. It's very simple. That is 2:3. Option number C. So for question number 3, option number C is the correct answer. All right. Next, fourth one, the ratio compounded of duplicate ratio, triplicate ratio, sub-duplicate ratios and sub-triplicate ratios. So this time you have to find the compound ratio. Compound means combined ratio आपको calculate करना है. So in order to calculate the combined ratio, we have to multiply all the ratios together. सारे ratios को हम क्या करेंगे? एक साथ में multiply करेंगे. तो solve करने से पहले थोड़ा सा space बना लेते हैं इधर, so that हम easily उसको लिख सकें. Yes. So now question number 4. तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, किसका रेशियो कंपाउंड करना है? फर्स्ट वन इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5.
4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट मींस स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. Multiply by triplicate ratio of 1:3. Triplicate is the cube. 1 cube is 1 and 3 cube is 27. Then third one is subduplicate ratio of 81 is to 256. Subduplicate means square root. 81 का square root होता है 9 and 256 का square root is 16. And the last one, subtriplicate ratio of 125 is to 512. Subtriplicate means cubic root. So 125 का cubic root होता है 5 and for 512 it is 8. Okay, now सारी values आ चुकी है. Let's cancel them. 16 is cancelled. Okay, then 9 is cancelled with 27. 5 is also cancelled with 25. So now you can see what is left and check the answer. 15 into 8 is 120. So 1 divided by 120, or you can write 1:120. So this is the correct answer. That is option number D. So D option is correct. Now the fifth one. Okay, for those students who haven't covered this chapter, जिन लोगों ने चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया है, तो इस चैप्टर का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, so that you can cover the chapter first and उसके बाद ही आप इस टेस्ट को अटेंड करें. All right. Now the fifth one. A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7. ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है. And what is the requirement of question? The question says find the value of A plus B plus C upon C. ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कौन सी? एडेंडो. तो यूजिंग एडेंडो, A plus B plus C. तो इन केस ऑफ एडेंडो व्हाट वी हैव टू डू, सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय सारे डिनोमिनेटर्स को भी ऐड करना है. ओके, नाउ इसको कंपेयर हम किसके साथ में करें? दिस कैन बी कंपेयर्ड विद, बिकॉज अवर रिक्वायरमेंट इज सी इन द डिनोमिनेटर. हमें सी चाहिए, तो आप सी वाली वैल्यू के साथ में कंपेयर कर सकते हैं. यू कैन कंपेयर इट विद सी. ओके, नाउ डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो A plus B plus C upon C is equal to 14 by 7. Therefore, the result is 2. तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है 2. There is one more way to solve this question. सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी समझ लेते हैं. A by 3 equal to B by 4 equal to C by 7. So इन सबको हम इक्वेट करते हैं एक कांस्टेंट के, एंड वो कांस्टेंट कौन सा ले लिया हमने? K. Let these be equal to K. Now one by one सबको K के साथ में कंपेयर करना है. So A will be equal to 3K, B is equal to 4K and C is equal to 7K. ये तीनों वैल्यूज आ चुकी है आपके पास A, B and C की. Now applying these values in the given question. So A is 3K, B is 4K, C is 7K, divided by value of C again 7K. So 14K upon 7K gives the result as 2. So दोनों मेथड इजी है, आपको जो अच्छा लगे you can use that. Okay, this was question number 5. The correct option is B. All right. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10. नाउ जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशंस दे रखी है, देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली बाय यूजिंग ऑप्शंस. तो व्हाट इज द कंडीशन? कि दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 7:10 है एंड उनका डिफरेंस कितना है? 105. Now, जो ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो चेक करके देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑप्शन नंबर ए,
दोनों का डिफरेंस 105 है, यस। नाउ चेक द रेशियो। कैंसिल किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ 5। 5 से आपने कैंसिल किया, 40 एंड देन 61। सो रेशियो डजंट मैच, इज इनकरेक्ट। 185 and 290, difference is 105, yes. Now we can cancel with the help of 5. Let's get cancelled. So it become 37 and how much? 58. Yes. So this option is also not correct because हम इसको आगे simplify नहीं कर सकते. 37 is the prime number. Then 245 and 350. Again, the difference is 105. Now you can check. You can cancel with the help of 5 again. It will be 49 and 70. Now 49 and 70 further cancel हो रहे हैं with the help of 7. 7 से आपने cancel किया, it becomes 7 and then 10. So this is the correct ratio. इस बार आपका ratio correct है. Therefore, option number C is correct. Okay, option number C is correct. Seventh one, two numbers are respectively 30% and 40% more than a third number. तो कोई थर्ड नंबर हमारे पास अवेलेबल है, उससे ये दोनों नंबर ज्यादा है. कितने ज्यादा है? वन इज 30%, अदर इज 40%. फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स. तो इन दोनों नंबर्स का क्या रेशियो है, ये पता लगाना है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सा मेथड है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं. लेट दिस थर्ड नंबर बी 100. इस थर्ड नंबर को आपने 100 मान लिया. So what is the first number? First number is 30% more. तो 100 में जैसे ही आपने 30% ऐड किया, you get 130. You can check on calculator. 100 plus 30% gives you 130. What about the second number? Second number 40% ज्यादा है. You can add 40% and you will get 140. Okay, now what is the requirement of question? ये कह रहा है find the ratio of these two numbers. तो इन दोनों numbers का क्या ratio होगा? You can simplify them. 0 and 0 will get cancelled. So 13 ratio 14 is your final answer. All right, that is option number C. This is question number 7. Next one, 8th. Find in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there is a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and increment in their wages in the ratio of 22:25. Now this question is a bit tricky question. थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा कि गिवन क्या है एंड आपको फाइंड क्या करना है. सो क्वेश्चन सेज किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. ये आपको फाइंड करना है कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स की वेजेस है, कौन सी टोटल वेजेस, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर आर सम चेंजेस इन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड ऑल्सो देर इज चेंज इन देयर वेजेस रेट. तो इन दो चेंजेस की वजह से टोटल वेजेस में क्या आएगा? चेंज आएगा. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहां पर आता है आपके पास एक शॉर्टकट वे. सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे? ऑलवेज राइट द गिवन थिंग्स फर्स्ट. क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स पहले कितने थे? 15 एंड नाउ दे आर डिक्रीज टू 11. 15 से कम होके अभी कितने रह गए? 11 रह गए. देन व्हाट अबाउट द वेजेस रेट? वेजेस रेट इज इंक्रीज. देयर इज एन इंक्रीमेंट इन वेजेस रेट. किस रेशियो में हुआ है? पहले वेजेस रेट थी 22, अभी कितना हो गया? 25. एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ रेशियो, बट देयर इज नो इश्यू, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. तो वर्कर्स का रेशियो पहले था 15, अभी 11 है. वेजेस रेट पहले 22 थी, अभी 25 है. सो लेट्स चेक व्हाट अबाउट देयर टोटल वेजेस. दोनों का टोटल वेजेस कितना हुआ?
15 multiplied by 22 becomes 330, and 11 into 25 is 275. So 330 denotes old total wages. ये क्या है आपका old total wages, and 275 is new total wages. एंड आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ओल्ड एंड न्यू वेजेस को, ओल्ड वर्सेस न्यू. Old is 330, new is 275. You can cancel them. पहले cancel कर लें with the help of 11. Okay, 11 से आपने cancel किया, you get 30, and here you will get 25. Again you can cancel with the help of 5. 6 ratio 5. So 6 is to 5 is the correct answer. That is option number C. So this is the shortest way. The same question is available in your study material, but वहां पर method थोड़ा सा different given है, and I have used the shortcut way to solve this question. All right. I hope you like this shortcut way. Ninth one. A earns rupees 150 in 12 hours. A की अर्निंग 12 घंटों में 12 आवर्स में 150 है, जबकि बी की अर्निंग है 116 8 आवर्स. तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स. तो जब भी आपको रेशियो निकालना है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू चेक द क्वांटिटी और टू चेक द यूनिट. दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. ए की अर्निंग गिवन है 12 आवर्स के लिए, अदरवाइज, एंड बी के लिए गिवन है 8 आवर्स. तो यूनिट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम. तो दोनों को सेम ग्राउंड पे लाने के लिए वी विल कैलकुलेट आर्ली वेजेस, पर आवर वेजेस. तो ए अगर 12 आवर्स में 150 रुपीज अर्न करता है, देन इन 1 आवर वो कितना अर्न कर पाएगा. लेट्स सी. ए will earn 150 divided by 12. This much A will earn in 1 hour. And B कितना earn कर पाएगा? B will earn 160 upon 8. इतना B earn करेगा. Now we have to calculate the ratio. We have to find the simplified ratio. So let's simplify them. इसको आपने cancel कर दिया, it becomes 20. And here also you can cancel. इससे cancel करेंगे directly from 6. This is 2 and this is 25. So it is 25 by 2 ratio 20. Now further you can cancel them with 5. It becomes 5 by 2 and it is 4. So what is the final ratio? So 5 by 2 ratio 4. Take the LCM. You will get your result. So 5 ratio 8 divided by 2. Hence, the final ratio is 5 is to 8. So their earning is in the ratio of 5 is to 8. Option number A. Okay. Now the next one, 10th. It says the first, second, and third month salaries of a person are in the ratio of 2, 4, and 5. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ की जो सैलरी है, इसका रेशियो गिवन है 2, 4 एंड 5. द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सैलरीज फॉर फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months इज 480. देन फाइंड द सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ. तो सेकेंड मंथ की सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है. नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट दिस and what is the shortcut method to solve. तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो रेशियो है दैट इज 2, 4 एंड 5 इन तीनों मंथ्स की सैलरी का. ऑल्सो क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज. सो लेट्स मेक सम स्पेस फॉर सॉल्विंग. So let the salary for first month की सैलरी को आपने अज्यूम कर लिया 2x. Salary for second month will be how much? 4x.
and for third month it is 5x. Okay, this is the salary. Now, the difference between the product of first 2 months. The product of first 2 months is 2x and 4x. And also the last 2 months, that is 4x and 5x. So let's find the difference. 4x into 5x minus 2x into 4x. So in दोनों का जो difference है, that is given to us. That is how much? 480. 4 crores 80 lakhs. Now let's simplify. 4 into 5 is 20x square minus 8x square is equal to 480. So it is 12x square equal to 480. Cancel with the help of 12. So x square will be 40. Now taking square root both the sides, so x will be 2000. This is the value of x. But what we require, हमें क्या चाहिए? We require the salary of second month. तो second month की salary है 4x. So 4 multiplied by 2000. It will give 8000. So 8000, that is option number D, is the correct answer. Okay. Now the 11th one. If 50 is the third proportional to 8 and x, then find the value of x. So it is the third proportional. So whenever we are talking about third proportional, then what is the formula? So let us understand 8, x and 50. 50 is the third proportional to 8 and x. So the formula says b square equal to ac. B is the middle term. So x square is equal to 8 multiplied by 50. This gives 400. So value of x will be 20. Option number A. 12th one. The numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion. Now at present they are not in proportion. So what you have to do? You have to change the fourth term so that they will come into proportion. So let the fourth term be x. 14, 16, 35 and then x. Now apply this. 14x equal to 16 into 35. So x will be 16 into 35 divided by 14. You can cancel with the help of 7. So you will get your answer. How much? 8 into 5 is 40. So correct answer is 40. Now the 13th question. It says A ratio B is equal to 4 ratio 1. Then find the value of root A by B plus root of B by A. You have to find this value. So it shows that whenever such kind of situation is there, it means value of A is 4 and B is equal to 1. Now substitute the value. 4 by 1 root plus 1 by 4 root. What you will get? 2 plus half. That is 5 upon 2. Option number D. Option number D is the correct answer. Now the 14th one. P by Q is equal to R by S. Multiplies P by R and Q by S. P by R and Q by S. So if this is written as P by R equal to Q by S, that means we have altered these two values. इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर लिया है? ऑल्टर कर लिया है, चेंज कर दिया है. So this is known as alternando. That is option number B.
Option number B. Okay. Now 15. If 1 cup of milk is added to a 3 cup mixture, which is 2/5 of flour and 3/5 of milk, then what percentage of the 4 cup mixture is milk? Okay. So now this is a different question, but it is very easy question. See, at present, what is the condition? There is a mixture of 3 cups. 3 cups mixture is there. Now, of these cups, how much is the flour? Flour is 2/5. Flour is 2/5. And what about the milk? Milk is 3/5. Now, what is the 2/5 of 3 cups? 2/5 of 3 cups, it is 6/5. And what is 3/5 of 3 cups? It is 9/5. This is the quantity. Okay, this is the actual quantity. Now, what we are doing, 1 cup of milk is added. We are adding 1 cup milk. That means quantity of milk will increase, but quantity of flour will remain same. Okay, so let us add 1 cup milk. So plus 1 we are doing in the milk. Also, you want to convert into decimal, you can convert. It will be easy. So it will be 1.8 and here it is 1.2. So 1.8 plus 1 cup of milk, it becomes 2.8 cups of milk. And here it is 1.2 cups of flour. Now, according to question, what is the requirement? It says, what percentage of 4 cup mixture is milk? In 4 cup में milk का percentage कितना है? So milk is 2.8 cups divided by total number of cup is 4 multiply by 100. Why multiply by 100? Because हमें percentage में calculate करना है. So let's